So yeah, good evening everyone, and we'll continue with yesterday's topics. हम जो भी कल करे हैं, so whatever we have studied yesterday, that will be the basic foundation of today's session. And please don't worry if you have not understand it, properly in yesterday's session. I'll explain, even if it is a bit clumsy, you can stop me there and you can ask me whatever it is. So कल हम बात किए थे what is probability space first of all. So what actually we studied? We have studied one, what is probability space, and second is what is event space, and third is what is probability of something, right? So probability space, event space, yeah, and another more important thing is random variable, right? So yeah, like tell most of you were there, I think. So Aditya, can you tell me what is event space? कल event space के बारे में हम बात किए थे. We have like I have given two examples, real world examples. So what it is actually? Why I was not there? Which anyone from first years? Varchas. Yep. Collection of all events, all possible events, Collection collection of all possible events is omega, which is sample space. Collection of I'm asking. all Yeah. possible subsets of events. It is the power set of sample space exactly. So it is kind of collection of all possible subsets for a given event. That is, for a given event, if you have possible outcomes, you take first of all outcomes of them, and you take complement of them, and also you take the combination of those elements, those sets. So it will be a power set of sample space. So that is event space. And next, I have spoke about random variable. Can anyone tell what is random variable and why it is called as random variable? कल मैं एक डायग्राम बनाया था, दो सर्कल्स ड्रॉ करके. वर्चस, Yes. are you speaking? Can you hear me? Yeah. Mic was working, so I left it on. Acha, I'm asking about random variable. Are you able to answer it, or you gonna text or something? No, I think I need you explain. Okay, Piyush, you were next to me when I was explaining yesterday. What is random variable and why it is called a variable? Uh, Random variable is something that means we find the probability with some condition on events. Probability. Okay. Probability of events with some condition. Like probability of event y given that x. So that is about probability. I'm not asking about probability. So I'm asking about what actually a random variable is. Probability तो इसका बाद आता है. So yeah, random variable is a function x which is mapping from omega to a target space t.
So it will act like मतलब कुछ values लेगा real number से जो target space के अंदर होता है, right? For example, if you toss a coin, HH, TH and TT and HT होगा. So if the event is the number of heads, इसके अंदर 2 होगा, इसके अंदर 1 होगा, इसके अंदर 0 होगा, इसके अंदर 1 होगा. So the the random variable can take values from 0, 1 and 2. So these can be the values for this x. So basically we are depending on these chances, right? We don't know what's gonna come when we do certain event. So we are uncertain about the values. So out of these three, anything can be in x. So that's why it's a variable. And based on the chance and time, it will change the value. So that's why it's called a variable. But actually it is a function which is mapping from omega to target space, right? So अभी तक clear होना चाहिए. So next हम एक example लेंगे and from that we will understand how some product rule वगैरह आएंगे वगैरह. So these are the very basic rules in probability. जो भी चीज है जिसमें आप probability का शब्द उपयोग करते हो, like जो भी concept हो, even if it is in pure mathematics or physicist or anything, whoever uses probability, they must follow these two rules and combination of these two rules. So हम एक random variable लेंगे, random variable x होगा and x के अंदर x1, x2, x3, x4, x5 ये हो गया. एंड y एक रैंडम वेरिएबल लेंगे, उसके अंदर y1, y2, y3 y3 होगा. So what all these things are called in the subset? इसको क्या बोला जाता है? Can anyone tell? Yesterday I have explained it. अगर x is the random variable and these are the possible chances, these are called states. So each element inside this is called a state. So LLMs में state is defined by a at time t. So it is referred like this in LLMs. So inference time पे जब t के साथ t is that step. So ये 0 के साथ साथ millions में जाता है when you train a model or an agent. So ये time के हिसाब से and उसका decisions भी हिसाब से. If you take a decision of s, so st बोला जाता है इसको. At time t, if a decision is made s, then st will define whatever decision it made, and based on this decision and based on the parameters, it will define the state. So state is very important when you understand LLMs. So for now you just understand like x का possible values हो सकते हैं, ये चीज possible states हो सकते हैं. So I've already draw this table. अगर x1 y1 है, इसका combinations ऐसे होंगे. And what is n? So n is a number. So capital N times एक event हुआ है, एक same event capital N times हुआ है. तो random variable this is x, right? This is x and this is y. y का ये variant से, x का ये variant से, right? So x का x1 state and y का y1 state होने के chances n11 times. So this is a number. So based on n, so and this small n is always less than or equals to n, right? So this is the number of times when we get a state which has both x1 and y1. Similarly, all these states, 15 states, will be repeating these many times. This is number, okay? This is the state. Y1, x1 is the state, and all these values are frequency. So if I ask you, like, probability of x होने का like x4 and y होने का
y2, so इसको क्या बोलते हैं? So x is x4, right? This column, and y is y2, so this row. So intersection of both these rows is n42. So इसका probability हो जाएगा n42 by total number of trials, that is total. So इस specific state के लिए इतना probability होगा simply, right? So I hope you understood up to now. Is there any doubt? Just say yes or no in the chat if you are not able to speak. अभी तक नहीं, okay. So एक स्टेट का probability निकालने के लिए number of यहाँ पे occurrences by total number of trials, that will give you the probability of each state जहाँ पे दोनों states, ठीक है? So next हम बात करेंगे, यहाँ पे हम ये भी डिफाइन कर रहा है एंड ये भी डिफाइन कर रहा है, दोनों रैंडम वेरिएबल्स को डिफाइन कर रहा है, दोनों रैंडम वेरिएबल्स को डिफाइन कर रहे हैं कि ये रैंडम वेरिएबल का ये स्टेट होना चाहिए एंड दूसरा रैंडम वेरिएबल का ये स्टेट होना चाहिए. If we only say, so this type of probability is called joint probability. Joint probability मतलब हम अगर कितना भी like let's say we have a certain number k number of random variables है, तो सबको डिफाइन कर रहे हैं कि सबका एक एक स्टेट होना चाहिए. So that is called joint probability. एंड हम बात करेंगे नेक्स्ट एक्सप्लिसिटली एक चीज को हम भूल जाते हैं. लेट्स से लाइक वी डू नॉट केयर अबाउट y, वी ओनली से प्रोबेबिलिटी ऑफ x being x4, राइट? x being x4. सो हम जब दो चीज ले रहे हैं, देन वी आर सर्चिंग फॉर द इंटरसेक्शन ऑफ दिस कॉलम and this row. We'll get a point here, right? But here we are only giving one line, so it should be a column or it should be a line. So यहाँ पे x के बारे में बात कर रहे हैं, so it should be a vertical column. So यहाँ पे हम क्या करते हैं, n like x जहाँ भी 4 हो उस सबको हम सम करते हैं. So n41 plus n42 plus n43 whole divided by number of trials. So this will give you this thing. यहाँ पे हम y को specify नहीं करते हैं. So this type of thing is called marginal probability. Marginal probability. So यहाँ पे we ignore entirely anything. So if in the same case, if I say y equals to y2, so what will be the formula here? Can anyone unmute yourself and speak for this? अगर x के लिए we are saying like जहाँ भी x का value 4 हो रहा है, then we'll sum all of that and we'll divide it by total number of trials. So यहाँ पे Sir, yeah, it would be n12, n22, n32, n42, and 5 so Yeah. on n. so n2 यहाँ पे 2 हो रहा है, राइट? so हमको x में क्या है उससे इंटरेस्टेड नहीं है, so y में बस हमको 2 होना चाहिए. So it will be like this up to n52 divided by n, right? So this is simple. So this is called, again, this is marginal probability of y. Okay, this is marginal probability of x. So यहाँ पे हमको पता नहीं कि दूसरा वेरिएबल है कि नहीं. अगर है भी तो हम we do not care. So we just speak about these lines. So यहाँ पे 2 conditions है. So they should intersect. So this is end. यहाँ पे जब मैं यहाँ पे comma लगाता हूँ, so this is intersection. And यहाँ पे it only speaks about one subset. This speaks about this subset. So यहाँ पे हम 2 condition random variables को लेंगे. तो ये वाला part हो गया this condition where this is x and this is y. And जब ये वाला part कर रहे हैं, then we are only caring about this x whole. And जब हम y का बात कर रहे हैं, and this is the whole thing which we are talking about. So this is joint, which is the intersection of it, and यहाँ पे marginal, which is only x and only y. So अभी तक तो clear हो जाना चाहिए. It is very very basic. So इसको हम represent करते हैं, generalize कर लेते हैं कि अगर p का x equals to
लेट्स से x है एंड y इक्वल्स टू y I है, राइट? तो उसका क्या होना चाहिए? इट शुड बी n I j divided by, so this is y, n I j divided by n, राइट? सो जितना टाइम, मतलब यहाँ पे हम क्या किया था, जस्ट y and 2 को सब्स्टिट्यूट किया था, वी गॉट दिस, राइट? द सेम वे वी आर जस्ट नॉर्मलाइजिंग दैट. सो इसको एक साइड में रख लेना इक्वेशन 1 बोल के. एंड नाउ वी आर डिफाइनिंग द, जनरलाइजिंग द मार्जिनल प्रोबेबिलिटी. p ऑफ x इज इक्वल्स टू xi होगा. तो हम क्या करेंगे, पूरा का पूरा जो कॉलम है वो पूरा का पूरा कॉलम लेके आएंगे. लेट्स से सी आई वे टोटल नंबर ऑफ n. द सेम वे p ऑफ y इक्वल्स टू वाई जे कब होगा, जब रो इज जेथ वाला रो एंड ये. सो दिस सी आई इज इक्वल्स टू दिस स्पेसिफिक पार्ट, एंड यहाँ पे आर जे इज इक्वल्स टू दिस स्पेसिफिक पार्ट. आई होप यू अंडरस्टैंड. सो ये हो गया. तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? हम इसको कैसे लिख सकते हैं? इट इज जस्ट समेशन, राइट? विल जस्ट यूज दैट सिग्मा नोटेशन फॉर दिस. सो यहाँ पे क्या होगा, ओनली द वैल्यू ऑफ जे चेंजेस हियर, बिकॉज सी आई मतलब सी आई का वैल्यू सेम ही रहेगा. तो यहाँ पे ओनली 4 विल बी स्टेइंग इन प्रीवियस एग्जांपल. सो ओनली जे का वैल्यू चेंज होगा. जे विल बी फ्रॉम 1 एंड इट विल बी अप टू 5. जे का वैल्यू कितना है यहाँ पे, या ये सेम रहेगा. So j is number of y values. So number of y values, let's say L. So it will be like that. And उसको हम nij बोल देते हैं. Only j will change divided by n. Right? तो अभी मैं ये बोल रहा हूँ कि यहाँ पे we got nij. Here also we have nij, right? इसका वैल्यू इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं. तो अब क्या हो जाएगा? तो हमारे पास है p of x equals to xi, that is equals to ci of n, that is equals to summation of nij, जहाँ पे j ही चेंज होगा 1 से लेकर नंबर ऑफ रोज डिवाइड बाय n. सो इसका वैल्यू, इसको हम इस तरफ लगा देते हैं एंड न्यूमरेटर में n आएगा, डिनोमिनेटर पे n आएगा, वो कैंसिल हो जाएगा. सो समेशन के अंदर j इक्वल्स टू 1 से l तक होगा एंड समेशन के अंदर क्या आएगा, p ऑफ x इक्वल्स टू xi एंड y इक्वल्स टू yz z. ये बस बच जाएगा. सो n कैंसिल हो जाएगा. सो दिस विल कैंसिल व्हेन इट गेट्स टू न्यूमरेटर में, लाइक वी सब्स्टिट्यूटिंग nij. सो n कैंसिल हो जाएगा एंड विल बी लेफ्ट विद दिस थिंग. सो p of x becoming xi, so it is defined by ये summation वाला part. That is j l p of x and y, ऐसे बोल देते हैं सिंपल फॉर्म में लिखने के लिए. सो दिस स्पेसिफिक रूल, तो यह समेशन, लाइक समेशन हो रहा है यहाँ पे. दिस इज सम रूल. दिस इज वेरी सिंपल, यू कैन सी. So you can take a small example, you will understand how to, लाइक अगर ये एग्जाम्पल ले लिया, डायरेक्टली आप फॉर्मूला पढ़ेंगे स्लाइड से तो थोड़ा बहुत मुश्किल लगेगा कि क्या है नोटेशन. जब हम ये ये एग्जाम्पल ले रहे हैं तो इट इज वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड, राइट? सो दैट्स द थिंग हियर. यहाँ पे as you can see, we are only considering one specific random variable, so it is a marginal property होगा इसको. अगर दिस इज डिस्क्रीट हो गया, लाइक z1 z2 z3 ऐसे z का वैल्यू चेंज होता रहता है, डिस्क्रीट वैल्यू. सो पॉइंट वैल्यू हम ले रहे हैं. सो यस्टरडे एज आई सेड, ग्राफ लोगे तो पॉइंट्स में अगर हम कैलकुलेट कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी, दैट इज डिस्क्रीट. अगर हमको कंटिन्यूस चाहिए, लाइक एक कंटिन्यूस चाहिए, तो हम दो सेक्शंस पे लेंगे, ए और बी, राइट?
सो ये वाला स्पेसिफिक एरिया जो है हमको क्या देगा, प्रोबेबिलिटी देगा. So in that case, instead of this specific, sigma, we just replace it by, integral. Integral lower range A, upper boundary B, and we will solve the same joint probability. So this is sum rule. So अभी तक कुछ doubt है? Sum rule क्या होता है? We are just taking marginal, property of marginal property के बारे में बात कर रहे हैं. एंड जब हम मार्जिनल प्रोबेबिलिटी के बारे में बात करेंगे, अगर दो रैंडम वेरिएबल्स होगा एंड वी ओनली से कि मुझे वो वाला रो चाहिए जहाँ पे एक्स का वैल्यू जो हो वो 3 हो, सो पूरा का पूरा रो या फिर पूरा का पूरा कॉलम हमको मिल जाएगा. सो वी जस्ट ऐड ऑल ऑफ दोज वैल्यूज. सो दैट इज सम रूल. हम अभी जाएंगे कि ये प्रोडक्ट रूल क्या होता है. सो अभी तक हम दो रूल्स टाइप ऑफ प्रोबेबिलिटी हम बात किए थे. One is joint. So joint is P of x comma y. This is how we represent. One is marginal. Marginal, that is you only access this or this. So this is marginal. Okay. अभी हम बात करेंगे conditional. Conditional probability. So conditional probability में होगा P of x for y. So P of x for given y. So यहाँ इसका मतलब ये है, अगर आपको y का कंडीशन ऑलरेडी है तो x का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, इसका क्या होगा. सो इफ आई से y इज इक्वल्स टू y2, सो x का प्रोबेबिलिटी कितना होगा. सो दैट इज द मीनिंग ऑफ द स्पेसिफिक नोटेशन, प्रोबेबिलिटी ऑफ x गिवन y कंडीशन. सो दिस इज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, राइट. तो मुझे अब आपको ये पूछना है कि अगर ऐसे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होगा तो y2, प्रोबेबिलिटी ऑफ y2 फॉर गिवन x4 कितना होगा. मैं ये बोल रहा हूँ जहाँ पे x4 हो वहाँ y2 होने का प्रोबेबिलिटी कितना है. Can anyone tell looking at this? Oh my god. This table. ये टेबल देख सकते हो आप नीचे. सो मैं ये पूछ रहा था कि जब x4 हो जाए तब y का 2 होने का चांसेस क्या है. सो x4 हो जाए मतलब टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस में कितना नंबर आएंगे. यहाँ ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा, एंड इसमें हमको फाइंड आउट करना है y2 कब कितना बार आ रहा है. तो सिंपल है ना. सो व्हाट वी डू इज वी जस्ट से so this is nothing but n of 42 divided by C4, जहाँ पे x4 है that is C4, right, the vertical column, and जहाँ पे n42 आ रहा है तो that is number of occurrences जहाँ पे ये दोनों कंडीशन सेम हो, एंड ओवरऑल सैंपल स्पेस में ये वाला कंडीशन जाएगा. सो सैंपल स्पेस के अंदर कितना बचेगा. सो जहाँ पे x इक्वल्स टू x4 है तो दैट विल बी द सैंपल स्पेस, एंड इसके अंदर y का वैल्यू y1 भी हो सकता है, y2 भी हो सकता है, y3 भी हो सकता है. सो हमको ये वाला ऊपर आएगा, दैट इज जब y2 हो एंड x4 हो, एंड ओवरऑल यहाँ पे x का 4 होता है तो ये वाला कॉलम आ जाएगा यहाँ. ओके, सो दैट्स इट. सो जहाँ जहाँ पे x इज 4 तो पूरा का पूरा कॉलम यहाँ पे आ जाएगा. सो ये पूरा कॉलम आ जाएगा एंड दिस इज द नंबर ऑफ पॉसिबल
and expected outcomes. So this is how you, like for small example you can understand this. So इसको भी generalize कर लेते हैं. तो फिर P of y becoming y is yz, right? And x को xi के xi की तरह से हम treat कर रहे हैं. So y का z होगा, x का i होगा. So क्या होगा? So same iz divided by, यहाँ पे x है condition में, so column आएगा, column i आएगा. So if I tweak this, reverse करूँ उसको, so probability of x being x for given y is equals to yi, then it will be nij divided by rho कहाँ पे, जहाँ पे y equals to j हो. So this will be the complement of it. So अभी इसको हम प्रोडक्ट रूल के अंदर लेके आना है. So what I'll do is, यहाँ पे मैं ऐसे लिखूंगा x equals to xi and y equals to yj, that is equals to nij by ci, right? तो इसका तो हम ऐसे लिख सकते हैं, राइट, ci by n. So ओरिजिनली इसका वैल्यू होगा nij divided by, so 1 second, हम यहाँ पे हम बात कर रहे हैं जॉइंट प्रोबेबिलिटी का, ठीक है? So, joint probability का, so it must be equals to this specific part. So overall outcomes by number of outcomes, पहले हम जो पढ़े थे joint probability. So इसको represent कर रहे हैं ci को multiply करके, right? तो अभी इसको हम बताएं, इसको कैसे लिख सकते हैं? What is this actually? This thing, right? So this is partial, probability of I and x being xi, and multiplied by ci of n. What is this? This is marginal probability of x being xi, right? So हमको ये formula आ गया. So this specific LHS is equals to this specific RHS. So overall in one place, if we write in simple terms, so P of x comma y, जब I, like when I write comma, it means it is joint. So that will be equals to P of y x for a given x, y का probability into P of x. And उल्टा अगर लिखें y and x, so it should be the same. यहाँ पे x पहले आ जाएगा, probability, and you write like this, straight line होना चाहिए notation में, P of y. So this is product rule. इसको factorization भी बोलते हैं. So एक joint probability को निकालने के लिए हमको ये formula आएगा. And this very simple thing is, अगर हमको ये वाला specific part चाहिए, conditional probability for a given condition, so we can just tweak this. So P of probability of y when given x, that is equals to probability of x of y, right? और यहाँ पे हम ये वाला part ले लिया है, and 1 second. So इसको अब हम derive करना चाहते हैं next row. So हम हमारा sum rule जो है वो हो गया, and product rule जो है, ये दोनों चीज हम खत्म कर लिया है. So ये दोनों चीज, if you understand, like ये वाला part and ये वाला equals to y होना चाहिए, yz होना चाहिए, yj होना चाहिए. And in this specific case, we are saying y equals to yj होना चाहिए and x equals to xi होना चाहिए. So we are just speaking
the same thing in different ways. So it should be like equal, right? Both of them. ये दोनों equal होना चाहिए. We just substitute these two principles here. So करेंगे तो P of by x, it will be as probability of y whole divided by P of x. So you just see this. So ये वाला part and ये वाला part को equal किया है, equation 1 and equation 2. तो जब ये वाला part equal किया है तो P y x will become इसका and इससे divide करना. And similarly if I want P x when given y, तो उसका क्या हो जाएगा? P of y given x into P of y, sorry, P of x and P of y. So these two will be a very, very important thing. So these two formulas are nothing but Bayes rule. Sometimes it's also called as Bayes theorem. तो हम यहाँ पे ये वाला रिलेशन को डिफाइन करेंगे, सेम चीज. सो या why we gonna study this? So ये actually क्या होता है LLMs में, ये वाला part. So by this only, by this specific Bayes rule only, it will generate tokens. So ये वाला rule use करके LLMs में VAE, virtual autoencoders and diffusion models, everything works on this only single formula, like not in the simple way. So they do certain tweaks or something like that, multiple times करते हैं, तो उसके हिसाब से which is it will help LLMs to give a meaningful response. So अभी तक मैं आपको 3 मेन फॉर्मूलास दे दिया है, राइट? फर्स्ट वाला मेन फॉर्मूला होगा जॉइंट वाला, जॉइंट, एंड सेकंड वाला होगा मार्जिनल. मार्जिनल हो गया, एंड थर्ड वाला होगा कंडीशनल. एंड so everything I have kept here in this PDF. So sum rule वाला ये चीज है, ऑलरेडी बताया, एंड या प्रोडक्ट रूल भी बता दिया, ठीक है, एंड बेस रूल भी बता दिया. सो ईच टाइम क्या है हम इसके ऊपर बात करेंगे, लेकिन फिलहाल लेट्स स्टिक विद द सिंपल एग्जाम्पल. सो मुझे अभी एक स्मॉल प्रॉब्लम सॉल्व करना है, ताकि पूरा का पूरा तीन जो रूल्स हैं आसानली आपको समझ में आ जाए. तो मैं ये बोलूँगा कि रेड इनसाइड एक शेप ले लूँगा, सो ये एक बैग हो गया, एंड ब्लू का एक लूँगा इनसाइड, so though we have two bags, okay. So अभी हम 2 बैग्स के अंदर 2 एप्पल्स रखेंगे इसमें, एंड 6 ऑरेंजेस रखेंगे. सो O is orange and A is apple. इस पे 3 एप्पल्स रखेंगे, and let's say 1 orange, okay, like that. So this is a red bag and this is a blue bag, and हमको probabilities दिया हुआ है कि picking a bag with 4/10.
a bag which is blue. So ये already दिया हुआ है and मुझे my god हेलो ओ है yes right yes संगीत तो ये दोनों चीज जो कंडीशन है वो दिया हुआ है so so what is this probability of like bag being red and this is probability of bag being big so ये दोनों चीज हमको दिया है so मेरे पास पहला क्वेश्चन है so what is the probability of is being apple मुझे इसमें वो मेरा इंटरेस्ट में नहीं है बट मुझे ये जानना है कि अगर मैं रैंडमली किसी भी बैग से मैं यू नो दैट फ्रूट बीइंग ए सो हाउ यू कैन सॉल्व दिस एनीवन We will take like add the probability of get apple from a blue bag. So for finding the Right. probability of apple from red bag, we will do what is the probability of getting a red bag? 4 Yeah. by 10. Ah, 4 by Yeah. 10. So 4 by 10 into 2 by 6. Okay. 2 apples. 2 by 8 2 by 8. for the red bag 2 okay 2 by 8 okay And that is 1 by 4 okay I'll write it when you say one second so you said probability of fruit being only a this is marginal right this is marginal we do not care about the color of a bag so it will be 1 by 4 that is 2 by 8 2 by total number of things in this no, this is just a probability for the red bag. 1 by इसके 4 साथ into 4 by 10. okay into 4 by 10 And similarly Plus- for plus 6 by 10 into 3 by 4. into 3 by 3 by 4 4. I guess this should be the answer. it should be somewhere 40 नीचे 40 आएगा तो हाँ। 20 ऊपर 22 19. so 11 आएगा अच्छा 11. 19 I सही। think. 19 कैसे No, sorry. हाँ ठीक है. So with this, we can also say P of F being orange, that is equals to 1 minus 11 by 20, that is 19 by, sorry, 9 by 9 by 20. 9 by 20. So this is the probability of getting orange and this is the probability of A. So यहाँ पे हम क्या किया है ये वाला स्टेप में आप क्या किया है यहाँ पे you just use logical it is like the simple two bags का problem है and you used it. So यहाँ पे हम क्या किया है so F of like P of F being A is probability of F being A, F being apple and joint probability, right? And red plus same F of P being apple and B being what? Red and blue, right? So blue. So इसका फॉर्मूला क्या होगा सम रूल से हम निकाला था एक प्रोडक्ट रूल से हम निकाला था प्रोडक्ट रूल से हम निकाला था क्या होगा इसका सो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आएगा इसके अंदर सो इट विल बी P of
F being A and B being R and P of B being R plus सेकंड वाला टर्म का क्या होगा P of F being A provided B being B for P of B being P. तो यहाँ पे ये बैग रेड से होगा ये वाला सो ये प्रोडक्ट लोड लगा के हम ये वाला किया है सॉल्यूशन एंड हमको ये वाला चीज आ गया सो फर्स्ट क्वेश्चन इसका आंसर हो गया 11/20 दैट्स तो सेकंड वाला क्वेश्चन ये है कि मुझे ये जानना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ लाइक मुझे ऑरेंज निकालने का प्रोबेबिलिटी चाहिए एंड वो ऑरेंज मुझे ब्लू बैग से ही चाहिए सो इन written format I want fruit to be orange provided B to be blue तो इसका क्या होगा anyone so this will be the answer right जब conditional probability आएगा so Bayes theorem Bayes rule trying to understand what I'm trying to say yes anyone अभी कुछ डाउट है क्या इसमें अरे कुछ तो बोलो ओके ओके सो यहाँ का आंसर ये हो जाएगा कि probability of F being O and B being blue divided by yeah, like probability of B being क्या होना चाहिए B होना चाहिए and probability of F being orange so that is 1/4 right blue में कितना है ऑरेंज एक ही है तो 1/4 हो जाएगा एंड 6/10 तो दे ही दिया मैंने इसके ऊपर से यहाँ पे ये वाला आंसर पहले से निकाल दिया हमने so it is somewhere around 2 2 and 2 2 and 3 2 sorry and 2 comma somewhere 1/3 कैलकुलेशन इज करेक्ट तो 1/3 आ जाएगा राइट सो ये वाला प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया हम ये वाला क्वेश्चन में दो दो चीजें सॉल्व किया है वन इज व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ फ्रूट बीइंग एप्पल नो मैटर व्हाट बैग इट इज कम्स फ्रॉम एंड सेकंड वाला क्वेश्चन में हम ये सॉल्व किया है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑरेंज प्रोवाइडेड द बैग इज ब्लू ठीक है दिस इज द सिंपल small exercise kind of thing which you can understand by which you can understand all three rules अभी हम बात करेंगे मशीन लर्निंग के बारे में so for now we already solved this enough maths so it is the boring part of the lecture so हम अभी बात करेंगे कि क्या होता है ये प्रोडक्ट रूल क्या होता है वेक्टराइजेशन देखिए फैक्टराइजेशन क्या होता है वो सब चीज़ हम बात करें सो इसके अंदर जब हम आएंगे तो पहले से एक बार रिविजन भी हो जाएगा सो मोटिवेशन क्या है आज का सेशन का प्रोबेबिलिटी थ्योरी इज एन एक्सटेंशन ऑफ लॉजिकल रीजनिंग सो लॉजिकल रीजनिंग लाइक लॉजिक्स लगाना लॉजिशियन बनना इज द मेन थिंग एंड अंडर अनसर्टेनिटी अगर इक्वल चांसेस है सब चीज को लाइक एक टॉस करेंगे तो हमारे पास हाफ हाफ का चांसेस होगा सो जब हम दोनों सेम ही प्रोबेबिलिटी वाला चीजें के बारे में बात करते हैं तो वी आर अनसर्टेन अबाउट व्हाट इज द एक्चुअल आंसर सो देन वी नीड टू use this extension of logical reasoning so the two fundamental rules which are sum rule and the product rule so model ml में probability का ये जो rules है वो कैसे काम आएंगे like probability modeling underpins ml so like ml के अंदर जो probabilistic models होते हैं so those things dependent on this sum rule product rule and Bayesian Bayes law so llms Bayes diffusion models all use these tools I already told you how they use it
So joint distribution is comma आएगा बीच में. You need to see this x comma y. X is a random variable, y is a random variable. Probability of x and y. So this is and. So intersection आएगा यहाँ. Marginal distribution p of x. So this is the probability of x alone, like no matter what y is. So probability of x alone. This is, it is like partial integration or partial differentiation. If you have read in first semester, you will be differentiating terms which are free of x only y बोल के कुछ एक प्रॉब्लम 2-3 प्रॉब्लम सॉल्व किए होंगे आप फोर्थ फिफ्थ मॉड्यूल में. सो दिस इज दैट काइंड ऑफ थिंग. यू डू नॉट केयर अबाउट one variable, you only care about the other one. So this is marginal distribution. यहाँ पे p of y for given x is conditional. अगर x होगा तो y होने के क्या chances हैं? So this is the conditional distribution. These three objects are connected exactly two rules. But one is sum rule, जहाँ पे sum rule का फॉर्मूला ये हो गया. तो अगर ये discrete है, this is, तो यहाँ पे पॉइंट्स के बारे में बात कर रहा है, then it is discrete. अगर हम एक रेंज के बारे में बात कर रहे हैं, ये 2, then this area, this is, that's why it is an integration. So we somehow integrate y jointly, leaving only x. So x जो specific part है उसको छोड़ के हम पूरा occurrences, पूरा states को हम integrate करते हैं. So यहाँ transpose का मतलब ये हुआ कि ये column type का आएगा. So इसको हम differentiate करेंगे, we'll explicitly leave x a. So this is basically the sum. So computational challenge, क्योंकि यहाँ पे every state is a latent vector. So यहाँ पे x is a latent vector. So हम जब हम बात करेंगे text के related, text के context में LLMs के अंदर, so अगर हम एक पूरा passage दें, so पूरा passage LLM याद नहीं रखेगा. So इसको याद रखेगा एक vector के form में. So it can be a tensor, इसके numbers होंगे, इसके अंदर कुछ numbers होंगे, random values मतलब इसका समराइज करके खुद का माइंड मैप में LLM एक वेक्टर बनाएगा. सो दिस इज हिडन स्टेट. हिडन LLM को पता होगा, एंड ऐसे सब वेक्टर्स को एक वेक्टर स्पेस में वो डिफाइन करता है. ओके, एंड एक एक जो लॉजिक्स है इसके अंदर, एक एक जो नंबर है, जितना भी नंबर हो उसमें उतना डायरेक्शंस होगा उस latent vector का. So when you plot this specific vector in this n-dimensional space, you will be giving a vector here. So यहाँ पे जितना भी numbers हो ये वाला x के अंदर, so this is x here. इसके अंदर जितना भी numbers हो उतना सारे directions होंगे, उतना dimensional space होगा LLM के अंदर. So this is called latent space. This is very very important. I'll cover this topic soon. ये एक मैं बुक पढ़ रहा हूँ which is about like 70 pages, एक आर्टिकल टाइप का है. उसको पूरा पढ़ने के बाद I want to teach this concept, how latent space is working inside LLMs. So ये वाला concept मैं डिटेलली कवर करूँगा. So generally for now you need to understand like एक टेक्स्ट को जब वो समझेगा, समझने के बाद जितना भी यहाँ पे लॉजिक्स होंगे, so each value is called a logic. So एक एक लॉजिक को एक डायमेंशन स्पेस में एक एक डायरेक्शन मिलेगा, एंड ईच डायरेक्शन विल सिग्निफाई सर्टेन मीनिंग. सो और एक बार मैं ये एक्सप्लेन किया था कि लेट्स टेक ए 3-dimensional स्पेस. दिस इज मैन, दिस इज वुमेन, एक वेक्टर है. तो यहाँ पे सन होगा, तो यहाँ पे डॉटर आएगा, राइट. सो ये वाला डायरेक्शन जो है, this direction will give you the meaning of gender change. So ये वाला जो डायरेक्शन है इसमें जेंडर चेंज होने का वो चीज है. So when you take this vector and you put it here, so you will get daughter here. You understand? So each यहाँ पे masculine का है, यहाँ पे feminine का है, the same. So each direction will signify a specific meaning. So मैं कहाँ आ गया यहाँ पे? So yeah. So because the data is so huge, these dimensions, this number can be very very long. So it can be very greater number, and so it can be very long.
सो यहाँ पे डी बोला गया है, सो या लेट्स से इट हैज डी। सो ये वाला जो सीरीज है वो बहुत बड़ा हो सकता है, एंड जब ये वाला जो पार्ट जो है वो बहुत बड़ा हो गया तो इसका कंप्यूटेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा इंटीग्रेशन का, राइट। और इसके लिए इट इज़ computationally impressible. This way it is hard. Why high dimensional integration is computationally impressible. In general, no known polynomial time exact algorithm works with here. So polynomial एक side होगा and एक side time होगा. So time it can be step number or in general time. So ये तो हम बहुत dimensions में like बहुत बड़ा dimensions में जब हम train करेंगे तो उसका जो कंप्यूटेशन है एंड जो इंटीग्रेशन है वो इट विल गो एक्सपोनेंशियली ग्रो, इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। तो consequences in ML model, तो क्या करेगा? सो मार्जिनल likelihood is often intraceable, so directly motivates variational inference and elbow optimization techniques. so ये एक्सपोनेंशियली ज्यादा होता है तो उसको ऑप्टिमाइज करने के लिए टू ब्रिंग इट into the real world scale we use certain things called elbow and variational inference in VAE. So VAE का मतलब होता है what is the actual full form? Auto encoders तो है virtual, right? VAE का full form होगा variational auto encoders. So this is called variational auto encoders. LLMs about this entirely, लेकिन LLMs में like low latency important होते हैं. So every time when you call, they don't do this computation. What they do is they do a specific type kind of computation. क्योंकि अगर ये computation करना है, this is the outermost step. बट इसके पहले LLMs के अंदर न्यूरल नेटवर्क्स वगैरह आएंगे, जितना लेयर्स होगा उतना कनेक्शंस होंगे. सो ये सब चीज करने के लिए इट इज नॉट दैट फीजिबल, राइट. यहाँ पे हम इंटीग्रेट करते हैं. सो ये वाला स्टेप को स्किप कर देता है. व्हाट इट डू इज इट नो एक्सप्लिसिट लैटेंट वेरिएबल टू इंटीग्रेट ओवर. सो लैटेंट वेरिएबल जो है एक्सप्लिसिटली वो ये जो स्पेसिफिक एक्स है उसको नहीं लेता. इट मेक्स दिस एवरीथिंग एज वन स्पेसिफिक स्टेट एट टाइम t इक्वल्स टू 0. सो यहाँ पे जब हम टाइम रिलेटेड बात किया है वो चीज LLMs के अंदर आएगी. सो एट टाइम t1 इक्वल्स टू एट टाइम t1 a का स्टेट है a1. एट टाइम 100 a का स्टेट हो गया 100. पहले जब मैं बात किया था आई सेड अबाउट स्टेट एंड ये स्टेट कैसे अपडेट होता है. सो स्टेट a t is defined as knowledge of step took at time t. So time t के हिसाब से जो भी काम किया है LLM उसके हिसाब से जब वो नॉलेज पास होगा अपडेट होगा उसका थीटा इज द पैरामीटर्स, नंबर ऑफ पैरामीटर्स. सो मॉडल्स भी हैविंग लॉट ऑफ पैरामीटर्स, राइट, बिलियंस के अंदर. वो वाला पैरामीटर्स यहाँ पे आएगा. सो वो वाला पैरामीटर्स से एक स्टेट अपडेट होता जाएगा. सो ये प्लस t1 क्या होगा? st का चेंज हो जाएगा, राइट. तो st t प्लस 1 हो जाएगा. सो दिस इज t माइनस 1. तो यहाँ पे दिस इज t माइनस 1. सो t आएगा और यहाँ पे t आएगा तो यहाँ पे t प्लस 1 आ जाएगा. सो दिस इज 5. तो प्रीवियस स्टेप से नेक्स्ट स्टेप, सो प्रीवियस जो स्टेट है उस स्टेट से हमको मिलेगा कि t प्लस 1 क्या होना चाहिए बेस्ड ऑन द एक्शन विच इट टुक एट स्टेट 80. सो स्टेट का मतलब ये होता है कि उसका मेमोरी में लाइक जैसे कि मैं एक LLM से बात किया. फर्स्ट आई सेड माय नेम इज जीजी बोल के मोड बोला. तो ये वाला जो इनपुट में दिया है LLM, सो LLM का आउटपुट होगा हाई हाई जीजी बोल के. सो नेक्स्ट टाइम मैं बात करूंगा व्हाट इज माय नेम, आई विल आस्क व्हाट इज माय नेम, मैं पूछूंगा. तब अगर उसके पास कनेक्शन हो, अपडेट हो, मेमोरी अपडेट हो, देन शी विल से लाइक योर नेम इज जीजी. अगर इसके अंदर कनेक्शन ना हो देन इट विल से आई डोंट नो. अगर कनेक्शन है देन इट विल से योर नेम इज
GG. So this is nothing but memory and understanding what it actually did at particular that part of time. So t equals to at specific time वो क्या किया है वो स्टेट के अंदर होता है. So that's why you see like LLMs के अंदर जब हम चार्ट के अंदर बहुत सारे चार्ट होंगे, you speak with LLM, it gives certain responses, right? अगर हम इसमें बहुत सारा बात कर लिया है एंड इस चार्ट को क्लोज करके नया जो न्यू चार्ट है वो ओपन किया है एंड वी वांट टू कंटिन्यू द चार्ट, इट वोंट अंडरस्टैंड बिकॉज एक एक चार्ट का एक शॉर्ट टर्म मेमोरी होता है, इसको थ्रेड बोलते हैं. तो एक एक शॉर्ट टर्म मेमोरी एक एक थ्रेड के अंदर होता है, एक एक चार्ट के अंदर होता है. एंड जो जब ये चीज बार बार एक फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड को क्रॉस करेगा, तब ये वाला like some components of that short term memory will go to long term memory, and that will store about your habits, your behavior, the way you speak, and your style and everything. So personality यहाँ build होता है, but at that instant instantaneous memory में ये states update होते रहते हैं. And this is पूरा A, and एक चार्ट के अंदर ये states every time it changes, and A T plus 2, so ये change होता रहता है based on your conversation. So this is the thing. So that's what I want to say. So ये हो गया. So क्या बोल रहा हूँ, जहाँ पे पूरा का पूरा सब इंडिविजुअल x1 x2 x3 सब लेटेंट वेक्टर्स यूज हो रहा है, वो बहुत एक्सप्रेसिव होता है बट कंप्यूटेशनली वेरी हार्ड. सो दीज आर लैटेंट मॉडल्स, VAE डिफ्यूजन मॉडल्स. दे कैरी ऑल लेटेंट्स. लेटेंट्स इन द सेंस x का जो भी वैल्यू है x1 x2 x3 अप टू xt, राइट. ऑटो रिग्रेसिव हम क्या करते हैं, स्टेट बेस्ड कर लेते हैं, मेमोरी बेस्ड, स्टेट बेस्ड A1 A2 A3 ऐसे करते हैं, AT ऐसे करते हैं. दिस इज द डिफरेंस बिटवीन latent models and auto regressive models, right? जिसको ऑटो रिग्रेसिव बोलते हैं, जिसको नॉन ऑटो रिग्रेसिव भी बोल सकते हैं, जहाँ पे लेटेंट्स डायरेक्टली यूज हो. सो यहाँ पे ज्यादा इंफॉर्मेशन होगा, देखिए इंडिविजुअल वी आर कंसीडरिंग एवरीथिंग. सो दिस इज एक्सप्रेसिव. ऑटो रिग्रेसिव में LLMs के अंदर इतना ज्यादा कंप्यूटेशन करने का feasibility नहीं है, so it will take a state and it is simple but less structured. But still you can see how wonders, what all wonders can it do by just applying this. So if it applies this, you can make realistic images, videos. अभी VO में जो भी diffusion based generative models है, they use this kind of details so that they will merge on the specific data distribution and it will express in a high way. That's why the realistic images are based on this kind of mechanism. Next, product rule. Marginal क्या होता है, conditional क्या होता है, this we already studied. So इसको visualize करना है तो prior belief. So this specific thing, one second. Yeah, let me take a spreadsheet for the. So product rule, हम बात करेंगे कि product rule क्या होता है. Time अभी हो रहा है 11. Okay, I'll take another just 20 minutes maybe. Yes. So product rule. So it is called like इसका इंट्यूशन जो है हम बात कर सकते हैं, लाइक बोल सकते हैं कि हाउ मॉडल्स थिंक. मॉडल्स कैसे सोचते हैं, दैट इज बेस्ड ऑन प्रोडक्ट रूल. सो P of x and y, that is given by P of y given x and P of x, right? So यहाँ पे x जो है, small x जो है, that is latent variable, right? We already studied this latent variable. Latent variable मतलब क्या होता है, hidden state, hidden vector. So पूरा टेक्स्ट को अगर एनालाइज किया LLM ने, उसका अंदर कुछ अंडरस्टैंडिंग मिला, दैट इज हिडन, दैट हिडन अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट स्पेसिफिक. सो इसको और रियल वर्ल्ड एग्जांपल देना है, सिंपल करना है, तो आई से वन थिंग, लाइक पूरा गूगल मैप होगा DSC से and आपका PG तक. सो गूगल मैप्स के अंदर पूरा एक एक चीज डिटेल्स वगैरह होंगे, क्या पाथ होगा एंड एवरीथिंग. But in your mind you have specific path that you don't have those many details, बस आपको पता है कि यहाँ से यहाँ तक पहुँचना कैसा है. So that specific understanding is latent.
एंड पूरा का पूरा जो गूगल मैप्स के अंदर है दैट इज टेक्स्ट इन पूरा डेटा, that is prompt or data which you have given or which it has already trained up, pre-training इसके ऊपर किया है. So this is actual data in details and this is latent. ये latent के अंदर आएगा x1, x2, x3 वो सब चीज. So x is a latent variable and y is हम अब जो भी predict कर रहे हैं, like अभी सोचने के बाद जो भी हम predict कर रहे हैं that is y. So this is predict कर रहे हैं या फिर ओरिजिनल डेटा जो जिसके ऊपर वो ऑलरेडी ट्रेन हो चुका है, दैट इज observed data. So it can be image or it can be text or it can be audio, any multi model बोल सकते हैं. मॉडल मतलब a kind of data, multi model मतलब different kind of data. So data can be textual or image or audio. So p of x का मतलब होता है probability of x. x का मतलब क्या है? latent variables, right? x का मतलब है x is already the knowledge inside the LLM, right? Knowledge inside LLM hidden state is x. तो हम ये बात करेंगे कि p of x, probability of x क्या होता है? This is we call as prior. Prior मतलब पुराना जो knowledge है उसके ऊपर क्या probability है. So that is prior over latent space. So these terminology is important. P of x is prior. Prior मतलब जो already existing है. ट्रेनिंग के बाद जो अंडरस्टैंडिंग LLMs के पास आया है उसको हम बोलते हैं प्रायर. एंड p of and the 10 what it is, y of x, right? So what it is, we will say decoder. और उस latent को फिर से टेक्स्ट के फॉर्म में लेके आना, डिकोड करना. लाइक आपके पास माइंड के अंदर एक मैप है विच आई सेड एंड उसको आप एग्जीक्यूशनल स्टेप्स और डिसीजन लेते हो, सो उसको डिकोडिंग करना बोलते हैं. सो माइंड के अंदर जो भी है उसको फिर से टेक्सचुअल फॉर्म में फिर से डेटा के अंदर कन्वर्ट करने के लिए डिकोडर बोल सकते हैं, और जेनएआई में जनरेटिव प्रोसेस बोल सकते हैं, राइट? So this specific part deals with generation of new data or decoding the existing knowledge. X is the existing knowledge and probability of X is prior over the latent space, understanding the latent space again. तो जो भी understanding है उसको कैसे use करना है, कितना percentage of that specific latent is used for a specific prompt. So that is the thing. So we can say LLMs, this specific statement is very important. LLMs are implicit latent via ऑटो regressive factorization. इसका मतलब ये है simple terms, we are using both these two terms for making LLMs to think. That's the problem. That's the thing. Implicit latents, understanding implicit latents via ऑटो regressive factorization. जो factorization यहाँ पे किया है प्रोडक्ट रूल. सो वो प्रोडक्ट रूल क्या होता है? LLMs जैसे वो रीजनिंग करते हैं उसका रिप्रेजेंटेशन. बट जैसे मैं बोला हूँ, these are like in VIs, जहाँ पे you take care about individual latents, then it will be a non auto regressive, right? VI kind of thing. But LLMs के अंदर हम individually latents को पढ़ते नहीं, we take state. तो इसके लिए हम प्रोडक्ट को continuously लगा देते हैं. t equals to 1, total time steps हो गया t. तो probability of yt based upon yt minus 1. so ये भी लिख सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे डाटा के बारे में बात कर रहे हैं which we already represented as y. So we are saying like पुराना जो टेक्स्ट था उसके हिसाब से नया जो टेक्स्ट का जो लॉजिक है वो क्या होना चाहिए, we'll do it. So this is like multiple times you multiply the same thing again and again. So this is it is nothing but repeated application of product rule. Repeated application of product rule. Okay. And each token prediction is, मतलब हम एक सेंटेंस दिया है, ट्रांसफॉर्मर नेक्स्ट सेंटेंस को फाइंड आउट करेगा, राइट? प्रेडिक्ट करेगा. सो ईच टोकन
prediction will be conditional probability. Like for a given specific t state, what is the current state will be. So that will be the conditional probability. So hidden states acts like dynamic latent variables. Like hidden state जो भी है, like x जो भी है latent variables. So those will be a dynamic latent variable. Like it will change with time. So hidden state जो भी है a, जब जैसे हम बात किया है, that is evolving xi. So latent variables को हम analyze करते 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 and हम actions लेते 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 we'll get update, we'll be updating the internal state of model. So next token yt, the next state, this is the data which we create. Next depends upon the latent xi and indirectly. So directly depends on the a and indirectly depends on the latent variables. So अभी तक कुछ doubts है? अभी तक कुछ doubts है? You can just raise hands and you can just unmute yourself and speak. कुछ भी doubt हो, जहाँ भी नील सब समझ में आ रहा है? सो गया क्या? लेकिन स्पर्श भैया can I continue then? Yeah. Okay. तो हम बात करेंगे नेक्स्ट कि हम ये बात करेंगे कि जो हम बेस थ्योरम पढ़ा है, 1 सेकंड, हम जो बेस रूल पढ़ा है, that is p of x for given by, let's say, is equals to p of y given x, p of x divided by p of y. This is what is taken. So हम इसके अंदर already I described. So this is likelihood. So this part is likelihood, this is prior, this is evidence, this is posterior. Posterior मतलब हमको y पता है, x को predict करना है, and यहाँ पे x पता है, y को predict करना है, and this is the prediction of x and this is y. So अब मैं ये बोल रहा हूँ कि पाइपलाइन एक समझना LLMs कैसे ट्रेन होते हैं. So पहले डाटा से प्री ट्रेन होगा, राइट? प्री ट्रेन होगा, हमको मिलेगा एक प्री ट्रेन मॉडल. So GPT समझो बोलते हैं, जनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर्स, दैट इज ट्रेन्ड. ओके, एंड उसके ऊपर होगा फाइन ट्यूनिंग, एंड इसके बाद होगा इन कंटेक्स्ट लर्निंग. सो अभी हमको ये दो स्पेसिफिक पार्ट्स बोलने हैं. सो प्री ट्रेन क्या होता है? सो प्री ट्रेन के बाद हम फाइन ट्यूनिंग करते हैं, फाइन ट्यूनिंग के बाद हमारे पास वो ऐप आ जाता है, एंड ऐप के अंदर जब हम प्रॉम्प्ट्स देंगे वो चीज इन कंटेक्स्ट लर्निंग बोलते हैं, राइट? सो डाटा के ऊपर, सो दिस इज ऑब्जर्व डाटा वाई एंड प्री ट्रेन किया है, एंड यहाँ पे हम बोलते हैं कि जो p ऑफ x है, जो लेटेंट वेरिएबल्स का जो अंडरस्टैंडिंग है, प्रायर, जैसे मैं बोला था, x इज latent variable and this is prior, so this is the existing pre-trained knowledge. So p of x is prior knowledge. Knowledge. And यहाँ पे लिख देता हूँ, p of x is prior knowledge and p of y of x, that is likelihood. इसका मतलब होता है कि हाउ लैटेंट इज रिलेवेंट फॉर टेक्स्ट जनरेशन. सो गिवन x ये वाला नॉलेज है, तो y मतलब जनरेशन कैसे हो रहा है. सो इट इज नथिंग बट कितना लाइक्लीहुड है तेरे पास इतना नॉलेज है, एंड आपका डिसीजन कितना सही होगा. सो दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ योर डिसीजंस फॉर गिवन नॉलेज which you have in your mind.
एंड p ऑफ x और गिवन y, इसका मतलब ये हो गया कि क्या, सो हमारा जो प्रॉम्प्ट है हम जो दिया है, हमारा जो क्वेश्चन है एलएलएम्स को दिया है, उसके हिसाब से उनका मीनिंग क्या होगा। सो यहाँ पे हम प्रॉम्प्टिंग को ये बोल सकते हैं कि अप्रोक्सीमेट प्रोबेबिलिटी कर रहा है, इसलिए अप्रोक्सीमेट पोस्टीरियर इन्फरेंस, इन्फरेंस का मतलब होता है थिंकिंग ओवर latent knowledge, that's it। अभी इसका मतलब क्या है, पहले डाटा था, उसको प्री ट्रेन किया, सो जीपीटी आया, सो ओलामा हो गया, ओपन वेट मॉडल्स जो भी है, सो दे परफॉर्म, दे डू प्रेडिक्ट नेक्स्ट वर्ड्स, बट उसका फाइन ट्यूनिंग एक स्पेसिफिक डाटा सेट के ऊपर नहीं हुआ है। तो हम करेंगे फाइन ट्यूनिंग, करने के बाद एक स्पेशलाइज्ड जीपीटी होगा, राइट। अब फिर भी इसका नॉलेज वास्ट होगा, तो उसको एक कंटेक्स्ट के अंदर, लाइक इसका भी नॉलेज बहुत बड़ा होगा, तो उसको हम लाइव टाइम जब यूजर यूज करता है, चैट करता है, उसके हिसाब से उसका नॉलेज को ट्वीक करना, दैट इज कॉल्ड इन कंटेक्स्ट लर्निंग, दैट इज नथिंग बट प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। मतलब ऐसे प्रॉम्प्ट दो एआई को कि आपका एग्जाम्पल से, आपका प्रॉम्प्ट से उसको बहुत ज्यादा नॉलेज मिले। लाइक एक प्रॉम्प्ट के अंदर स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, Verchus, can you speak about this prompt? I think you have not studied it yet. Fourth, fifth module में आएगा। इसमें अगर रोल, कंटेक्स्ट, क्वेश्चन एंड फॉर्मेट, ओके। सो अगर एलएलएम को एक रोल देंगे एंड कंटेक्स्ट देंगे कि वो कहाँ पे है एंड क्या सॉल्व करना है, एंड क्वेश्चन देंगे एंड आंसर का फॉर्मेट भी डिफाइन करेंगे, तो इससे बहुत ज़्यादा नॉलेज का, लाइक पूरा वेक्टर स्पेस में पूरा का इतना ज़्यादा स्पेस यूज करने के बजाय छोटा सा स्पेस यूज करेगा। क्योंकि वो छोटा सा स्पेस यूज करेगा उसका मेमोरी में, दैट विल बी वेरी कॉन्सेंट्रेटेड, एंड जब भी आंसर देगा इट विल गिव यू ए करेक्ट कॉन्सेंट्रेटेड आंसर। सो यहाँ पे फाइन ट्यूनिंग हो गया, राइट। पहले प्री ट्रेन हुआ, यहाँ पे फाइन ट्यून हुआ। सो प्री ट्रेनिंग के बाद जब हमारे पास नॉलेज आएगा, दैट इज पी ऑफ एक्स, दैट इज लैटेंट स्पेस का थिंग हो गया। एंड लाइकलीहुड मतलब जब हम प्रेडिक्ट करते हैं चीज, दैट इज पी ऑफ वाई फॉर गिवन एक्स, राइट। एंड प्रॉम्प्टिंग के अंदर जो भी हम सीखते हैं, सो दैट विल बी बिकॉज ऑफ पी ऑफ एक्स, लाइक दिस, राइट। हम we already gave the intent, like we already gave the why कैसा होना चाहिए, लाइक डाटा का क्वालिटी कैसा होना चाहिए, वो why हम ऑलरेडी दे दिया। सो इट विल अंडरस्टैंड व्हाट शुड बी द नॉलेज टू बी यूज्ड फ्रॉम इट्स वास्ट नॉलेज। तो आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। सो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, उल्टा कर रहे हैं। जब हम प्रॉम्प्ट दे रहे हैं इतना कंडीशन लिख के, देन वी आर मिनिमाइजिंग द स्पेस वेयर एआई शुड फाइंड इट्स आंसर्स। सो डॉक्टर एक 20 इयर्स का एक्सपीरियंस है, जनरलाइज्ड डॉक्टर है, एंड यू हैव अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम रिगार्डिंग आई, then you should not speak more about remaining other problems. You need to solve eye related problem. So you will give the specifications, how it felt and how long it been. So eye के related बहुत ज़्यादा information दोगे, and then he will and remember all those incidents कहाँ पे वो eye को treat किया था. So instead of treating, he has memories related to stomach, leg and everything, but he will only concentrate regarding eye. So पास्ट में जितना भी लोग आए थे उसका आई का रिलेटेड प्रॉब्लम्स कैसे हुआ है, एंड इज देयर एनीथिंग सिमिलर टू इट नाउ, सो वो वाला इन्फ्रेंस आएगा। सो वी आर डिफाइनिंग इन्फ्रेंस बेस्ड ऑन द आउटपुट। सो दिस इज पोस्टीरियर, आई मीन मीनिंग पोस्टीरियर इन्फ्रेंस बोलते हैं। सो व्हेन यू गिव ए प्रॉम्प्ट, मॉडल को इन्फर होगा एंड वो लैटेंट रिप्रेजेंटेशन को मॉडिफाई करेगा इन लाइक लाइव टाइम में, इन द चैट इटसेल्फ। सो दैट इज कंटेक्स्ट के अंदर, so that is called in context। so एक चैट के अंदर जब हम
देंगे prompt, so you will make AI learn in that specific window. That is called in context learning. And diffusion models थोड़ा अलग होता है, but I think it's already high time. I won't go in depth. So diffusion models क्या होता है? And for now, I'll say कि this much is enough. Diffusion models समझना है तो you need to understand how it works first of all. So basically what it does is it will take clean image, like clean data, clear image होगा, and इसको एक एक step के अंदर noise add करता रहेगा. So epsilon is the noise. So it will add epsilon, like noise add करेगा, and last में you will be left with pure noise. इसको Gaussian noise बोलते हैं. तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होगा इसका. सो इसका मीन जो होगा इट विल बी सेंटर्ड ऑन 0, एंड इसका जो वेरिएंस होगा दैट विल बी सिग्मा स्क्वायर. इफ यू स्टडी स्टैटिस्टिक्स यू विल बी अंडरस्टैंडिंग दिस. सो मीन क्या होता है, सिग्मा स्क्वायर क्या होता है, स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होता है, वी विल बी अंडरस्टैंडिंग समवेयर व्हेन वी अंडरस्टैंड डिफ्यूजन मॉडल्स इन डेप्थ. सो ये फर्स्ट फॉरवर्ड प्रोसेस में इट विल ऐड नॉइस एंड विल क्रिएट प्योर गॉसियन नॉइस, and we will train a neural network reverse process में, and we'll try to reach the initial condition by steps. ये भी steps ही होगा, but यहाँ पे neural network को train करेंगे कि ये पूरा noise से denoising steps होंगे. So कितना noise धीरे धीरे में निकालो and एक pure realistic image आए. So that will be the thing. So first forward process is noising step and reverse process is denoising step. So this is diffusion models. अभी आपका prompt के हिसाब से it will do the denoising and it will give you the clear realistic images when it denoises from the Gaussian noise. So ये वाला चीज हो गया. And I think mostly I covered everything. So yeah, एक बार unifying factorization, inference, break complex distributions into conditionals. Factorizations में हम क्या करते हैं, छोटा छोटा products को multiple times बनाते हैं, multiply करते हैं, then you will get a decision for LLMs. This thing inference based rule. Inference में क्या बोला था वो formula में क्या आएगा, prediction posterior generation of new text is based on likelihood, how new data is relevant to your knowledge and what is the overall past knowledge, and P of Y evidence. So evidence matlab this probability of this generated text, and you can study it once again after the session. This is related to diffusion. As I said, यहाँ पे I का मतलब है identity, जहाँ पे 1 हो जाए. And these are the future directions. So LLMs को purely they are not relying on latent vectors, right? Directly they are working with spaces. So vectors के साथ अगर काम करना है तो अगर हम वो दोनों को merge करेंगे, hybrid models बनाएंगे, तो it will be the new technology. It will be more optimized as well. So chain of thought मतलब होता है you give prompt in such a way that it will take multiple steps and give you the answer. So here you are doing in context learning. So यहाँ पे posterior inference के ऊपर काम कर रहे हैं. In context learning मतलब होता है amortized Bayesian updating. It is one term in it. RLHF मतलब reinforcement learning with human feedback alignment, shaping the posteriors with human preference. जब भी वो कुछ चीज बोलेगा उसको उसका जो प्रेयर्स है उसको ट्रेन करना है, उसको रिवॉर्ड्स वगैरह देना है उस चीज. अनसर्टेनिटी क्वांटिफिकेशन कैरिंग द फुल पोस्टीरियर फॉरवर्ड. सो वाई के हिसाब से वो डायरेक्शन के अंदर मूव करेगा, एंड अनसर्टेनिटी को क्वांटिफाई करेगा. लाइक 3 इक्वली लाइकली है अगर ऑप्शंस और आंसर्स, इट विल गेस समथिंग, सो इट विल टेक a step and will guess. So intelligence is nothing but choosing right factorization and approximation of posterior. So posterior का approximation क्या है, y का approximation क्या है based on x which you already have, and what is the factorization, how you do the thinking. Factorization मतलब होता है thinking product. Summary में ये आ गया. Next हम ये वाला concepts cover करेंगे. Exercise के अंदर simple exercise. I think it's already 5 minutes लगेंगे. ये मैं 3 एग्जाम्पल्स है यहाँ पे, तीनों का एक्सप्लेन कर दूंगा, एंड 3 try it yourself examples है. Tomorrow when you wake up, once again you revise these concepts
हम तीनों प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेंगे खुद से. So first question is, एक कॉइन है, it is fair or biased, right? So fair का मतलब हो गया लाइक इसके अंदर जो है प्रोबेबिलिटी जो है इक्वली है. सो हेड्स का होने का चीज जो है वो 0.5 है एंड वो भी 0.5 है. बेस्ट का मतलब यहाँ पे एक्स बी लाइक इट इज बेस्ट 80% ऑफ हेड्स, लाइक हेड्स का हो गया 0.8, टेल्स का हो गया 0.2. एंड प्रेयर इज गिवन लाइक दिस. प्रेयर का मतलब होता है कि I already said in LLM context it is latent का knowledge. So you flip once and observe heads. So find of heads. So X all like he said like heads आ गया है. So what is the probability of it being biased and as well as fair? So अगर मुझे एक कॉइन है, एक कॉइन के अंदर दो टाइप के टेंडेंसी है, either it can be totally fair or it can be biased. अगर biased हुआ तो इसका जो दे आर नॉट इवनली लाइकली, उनका जो प्रोबेबिलिटी वो बदल जाएगा. एंड ये ऑलरेडी हमको दे दिया है, जस्ट लाइक आई गेव यू इन प्रेयर एग्जांपल, फर्स्ट एग्जांपल. सो यहाँ का सॉल्यूशन आपको पता ही होगा. सो पीयूष ने सॉल्व किया था, सेम लॉजिक यहाँ पे, एंड यू जस्ट डिवाइड इट, विल गेट द सेम आंसर. पीयूष ने सॉल्व किया था सेम सम रूल यूज करके. सो यहाँ पे एन ऑब्जर्वेशन जेंटली नडजेस द बिलीफ, इट डज नॉट ओवरराइड द प्रेयर, अपडेट्स डाटा अपडेट्स प्रेयर, डज नॉट रिप्लेस them. सो जो भी डाटा है y जो है, जो भी डाटा है, इट विल अपडेट x. लाइक हमारा एक प्रॉम्प्ट दिया है, प्रॉम्प्ट देने से पूरा नॉलेज वो चेंज नहीं हो जाता, प्रॉम्प्ट देने से पूरा नॉलेज अपडेट होता जाता है. सो स्टेट विल evolve with respect to a, that's what it is trying to say, right? एंड सेकंड एग्जांपल हम लेंगे, डिसीज प्रेवलेंस 0.01%, यहाँ पे टेस्ट सेंसिटिविटी इट इज 0.95 एंड फॉल्स पॉजिटिव राइट इज 0.05. तो क्वेश्चन समझ में आया? तो डिसीज्ड है तो क्या होगा, डिसीज नहीं है तो क्या होगा, फॉल्स है क्या होगा, पॉजिटिव है तो क्या होगा. तो पॉजिटिविटी इज 1, negativity is 0, obviously, right? So how likely they are actually sick? So this is the same marginalization probability का हो गया. So you need to take the same formula. You need to understand the problem statement first and you need to substitute the values from the question itself. And last पे हमको y दिया है actually sick. So x equals to 1, like sick हो गया है तो positive निकलेगा, positive मतलब 1. So x equals to 1 होना चाहिए and जब वो positive निकलेगा तो what is the y? So that's the question. So a 95 accurate test yields only 16% posterior probability of being sick. This is the base rate fallacy. Ignoring p of x produces widely wrong conclusion. So we need to take care of this specific part कि यहाँ पे नहीं हो रहा है, यहाँ पे negative आ रहा है. We need to take off that value as well. Even scientific claim much account for the prayer. So prayer is always important. उसका अंदर जो भी knowledge है model के अंदर, that is always important. X. Last हम ऑलरेडी एक टेबल को सॉल्व किया है, राइट? तो यहाँ पे पूछा है कि आप सन क्या होगा, सन का मतलब ये दोनों वैल्यूज को ऐड करो, सिंपल. एंड प्रोडक्ट रूल से जब सन दिया हुआ है, इन दिस बोथ कंडीशन दिस कंडीशन इज हैपनिंग एंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस कंडीशन. सो इसका एंड इसका इंटरसेक्शन 0.35 एंड ओवरऑल सन का क्या है, तो ओवरऑल ये हो जाएगा. सो ओवरऑल 0.35 एंड 0.10, उसको ऐड करोगे, you will get this value and you will divide it, you will get this. So this one you already did in that previous example. बाकी 3 examples है. When you are free, you just revise all 3 formulas and उसका modern ML में meaning. You try to understand all this stuff. Like try to solve these 3 problems. Answers भी यहाँ पे लिख दिया already मैंने. You just try to understand how tables draw करके you need to understand how it is works. So yeah, this specific formula हम already product rule में हम बात कर दिया है. So this is the overall session for today's. So it deals with mainly 3 things. So
main three things are sum rule, product rule and base theorem. तीन simple formula है, but modern world में I didn't speak about diffusion models and I didn't speak about DAE and I didn't speak about marginal likelihood. Likelihood exactly क्या होता है? P of X for given Y and likelihood and posterior difference क्या होता है? Like P of X given Y versus P of Y given X इसका difference क्या होता है? हम पढ़ेंगे या फिर आप इस मॉड्यूल लाइक इस स्लाइड में ऑलरेडी है, यू कैन जस्ट चेक इट. So yeah, 11:30 हो गया है and I need to stop. Any questions regarding this session? Please ask me. कोई भी आप पूछ सकते हैं. Or should I ask questions from today's session? So yeah, seniors asked us to speak after the class, like about what each person is doing to understand each other. So yeah, we can have chit chat if you have no questions, or if you want me to ask questions, I can. जल्दी मैसेज करना. वर्चय, सुरक्षण, स्पर्श, आदित्य, शिवम. शुकत भाई. So जो भी DSA वगैरह कर रहे हैं, लॉजिक्स बिल्ड कर रहे हैं, इट इज वेरी इजी फॉर देम. स्पर्श के लिए, शुकत के लिए, चिराग, all DSA guys. Why are you guys silent? Surakshan, you can discontinue the recording.